Hello and welcome everyone to this empowering episode of Coaches Talk Show. So, this is our episode 8 in this series. How many of you are excited and ready to join us live today? Yes? Okay. I'll just check some setting over here till the time you all are joining us. Yes. Okay. So do me a favor, everybody who are joining us today. If you are watching us live, this Coaches Talk Show, please type live in the comments. And if you are watching the replay of this session, please type replay in the comments. Let's see how many of you joined us, right? Okay. Thank you so much, dear. Thank you so much. Yeah, let's begin. All right, so without further delay, we are going to begin our today's episode. I'm your host. My name is Neha Garg, and I'm a digital skills coach for women entrepreneurs. And I'm so excited today for today's conversation because this is really close to my heart. You know why? Because I want to tell you this very important thing. How many of you would agree with me that whenever we meet somebody and we left those that people so what we remember with that meeting is not the way the person was, not the way the person looked, but actually what the person said to you, right? Maybe their voice, the behavior, their words. And these words sometimes largely impact you in a way whether you create a positive image of that person or you create a negative image of that person. Yes. Yes, you know why this happened? Because many times your words, and I would say every time, your words can attract people and your words can repel people as well. So to understand this, because this is not something which can which can be mastered overnight. So to understand this very important topic, we have a special guest with us on today's episode of Coaches Talk Show. And she is not just a communication coach, but um, she is also a person who brings a lot of warmth, wisdom and experience with her, and she helps so many people find the real voice which can impact so many people and live a more true and authentic life. How many of you would agree what I'm saying here right now? Yes. So, with that note, I'm going to invite our today's guest on this show. Her name is Garima Sharma Nijhawan, and she's the founder of Authenticity. She's a communication coach and soulful mentor, and she brings her 15 years of experience to understand that how you can unlock the power of your voice and impact so many lives. So, without any further delay, I would invite her on our show, and let's just help me welcome on this virtual stage with a clapping so that we can begin our conversation. Yes? Okay. I'm gonna spotlight her so that we can all see her. Yes. Welcome, Garima, to the virtual stage. Welcome to our Coaches Talk Show. Thank you so much, Neha. Thank you so much for that wonderful introduction. Thank you so much for setting the stage so beautifully. I think you've captured the essence of what I've been trying to do very well. And I'm so glad and delighted, really deeply honored to be here talking with you on this Coaches Talk Show today. Thank you. Thank you so much once again. Now, let's begin our conversation um, with a simple thing. It's like how you started your journey as a communication coach and what inspired you to start this authenticity, because I love that word which you choose as your the mission. But how did you started your journey? Thank you so much for that question, Neha. Um, just like any other person who is young, ambitious, career oriented, I was contemplating early on in my life what is it that I want to do. There were two streams that attracted me. One was human psychology, and the other was conversations and communication, because somewhere even communications is
driven a lot by the psychology of verbal, non-verbal, things that are said on the surface, things that are not said but are evident on the surface, right? So, as a student, I was contemplating between these two subjects, and I chose mass communication at that point of time because it was an upcoming field. There was a lot of options available, and that's how I landed in college where I did my graduation in mass communication. Then I did a master's in public relations and advertising from one of the leading national institutions. It's the II of communication, IIMC, just like IIT and IIMs, right? It comes under the INB ministry, and that's where for the first time I felt एक होता है ना जब आप student होते हैं overall you're learning and you're trying to figure out where you fit in, but Correct. then you reach a place of flow where just by your presence you are succeeding one after the other, you are coupling one domino after the other, and you're getting success very naturally. So I think I really, for the first time when I was in INC, I realized that I belong here. All my years of conversations and being out there, and I was always very outspoken. All of that was channelized in a very positive way, and that's how I got into the field of communication. But I wasn't anywhere near coaching at that point of time. I spent 16 years in the field of communications as a integrated marketing communications expert, primarily in the field of public relations. सब कुछ हो गया over the period of time. 16 साल में great नौकरी. I was a senior director working in an MNC in Gurgaon. And life was good, money was good, position, power, designation, everything was there. But there was something in my soul that was not feeling alive and aligned. I also come from family of teachers. So जब मैं छोटी होती थी तो मुझसे कोई पूछता था क्या बनना है बड़े होके. So just because I saw teachers all around me, I was like teacher बनना है, right? And I didn't realize how that small thing that you say to the universe, that small dream that you dream really early on, that keeps growing and blooming in your heart. So after 16 years of being there, I was working as a senior director, like I told you. So I realized, yeah, okay, fine. But the life may, a lot of things are set. Financially, I was at a decent place. Professionally, I was at a decent place. Family-wise, everything was pretty set. Like, okay, fine. This is a time when I can bet on myself. This is a time when I can take a risk, and we all learn from similar mentors, right? You're coming from same space, I'm coming from same space. That was the time when I was doing my Goddess by Design Enlightenment with Yes. Pooja Puneet, and I realized, yaar, ek bari, let's just bet on myself and take a risk. And I stepped out of my comfort zone of a 9 to 5 job, in fact 9 to 9 job, because that's how it used to be. And I thought I will get into teaching full time. By then, I was a guest lecturer at a lot of places. I was doing my PhD. But then I realized teaching is not just horizontal, Neha. Teaching is very vertical. Teaching is very coming from within. And while we may give it different names, teaching, mentoring, coaching, upskilling, I realized in this journey of last 1.5 years that my deepest value is authenticity. My deepest value, because as a woman, there are so many times when I dim my light. There are so many times when we all just हाँ में ला देते हैं क्योंकि हमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए. कभी घर में नहीं चाहिए, कभी हस्बैंड से नहीं चाहिए, कभी इन लॉज से नहीं चाहिए, कभी ऑफिस में नहीं चाहिए, कभी बच्चों के साथ नहीं चाहिए. And the one value that we compromise the maximum is our authentic self. For the attachment that we are holding, the authenticity is something that we compromise on. And in this journey, as I came in the self learning development journey, I realized, okay, Garima, this is your highest value. Being authentic, being real, being vulnerable. आज अच्छा है तो अच्छा है. आज मेरे सही है तो आज, bear with me kind of a thing. And that's how my dream of authenticity was born. If you see छोटा सा logo है यहाँ पे, you will see a lot of things in this logo. This is like a lotus. So the journey is from mud to lotus. जितना toxicity में रहो, जितना भी muck में रहो, आपकी petal पे एक बूंद भी गिरे तो it should turn into a pearl. That's the beauty, that's the fragrance of the feminine energy. तो आज मैं authenticity की founder की तरह जैसे आपके सामने बैठी हूँ, I go to a lot of colleges.
I teach brand communications, body language, expression, negotiation, conflict resolution. I teach interview readiness to young kids who are getting into the professional space. In my heart, because I'm also a parent of a teenage daughter, puberty parenting is something that's very close to my heart, क्योंकि वहाँ बात करने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। True. और ये सारी बातें अगर हम सच्चाई के साथ करें, ऑनेस्टी और ऑथेंटिसिटी के साथ करें, oath of authentic living ले लें, nothing like it, then you become unstoppable. तो आपके छोटे से सवाल का मेरा लंबा सा जवाब ये है। I really loved your journey, the full journey you shared, and I could truly, resonate with a lot of steps. And I feel like, okay, I'm there, and I feel like, okay, this also happened in my life. So once you said now that whether they like, so I thought whether if they don't like it, still I want to stay authentic and I want to be authentic person, because sometimes I feel that who I am becoming is more important than who I am right now. So I feel So, the way you expressed, you shared your journey, many of the people who are listening to us surely going to resonate with this. Thank you so much for exactly. sharing all of your insight. And with that, we bring to our second question in this conversation is, you have all met a lot of people, and as I work with women entrepreneur, most of the time I feel that uh, the goal they have in their mind is to um it's like communicate their message in a proper way, so that Hmm, they can also grow, and with the people who are there connecting, they can also connect grow. very well. But I feel that there are so many women entrepreneurs who struggle with this. It's like how to communicate better with people, or I would say how to actually express themselves with Hmm. confidence, I would say. So according to you, what's the first step they can take to start owning their own voice? Hmm. That's such a wonderful question, Neha, and that's so relatable. Like you're saying that when I'm sharing my story, you could relate and you could see yourself in parts of it. That's that's the beauty of well, a well narrated story also. But that's the beauty and the power of the realism, the authenticity that we are talking about. Now, to your question, you're absolutely correct. Conversations are step one to connections. कॉन्वर्सेशन से कनेक्शन बनता है, कनेक्शन से रिलेशनशिप बनता है। अब वो रिलेशनशिप आपके चाहे पर्सनल स्पेस में हो, चाहे आपके प्रोफेशनल स्पेस में हो, unless you are able to express yourself fully, effectively, you cannot expect the other person to walk two steps towards you. दो जने हैं इक्वेशन में, दो स्टेप आप लेंगे, दो स्टेप वो आपकी तरफ लेंगे, तब जाके इंटरैक्शन होगा. With women specifically, like you're mentioning, and I very deeply feel for this cause. I'm also on the Wiki panel for public relations and digital marketing, and I do a lot of women mentorship. पहले मैंने खुद के लिए करा और आज मैं साथ में करती हूँ बड़ी कम्युनिटीज में. सबसे बड़ी चैलेंज क्या होता है कि वेरी अर्ली ऑन इन आवर लाइफ ना वी आर टोल्ड हाउ टू लिव लाइफ, राइट? बी इट फ्रॉम स्मॉल स्मॉल थिंग्स, बी इट ऑन द बेसिक्स. मैं प्यूबर्टी की बात क्यों करती हूँ बच्चों के लिए? वो कैसे दिखने चाहिए, वो क्या कपड़े पहने, वो किस तरीके से, किस लहजे में किससे बात करे. वेरी अर्ली ऑन यू आर इंस्ट्रक्टेड on how to be. What that does is every time somebody is telling you ऐसे करो, ऐसे करो, तो जो आपका स्टैचर है ना, खट 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 आप दबा लेते हैं अंदर, राइट? दिस जर्नी ऑफ getting your authentic voice back is about letting that tree grow again. एंड ये आप भी जानते हो, मैं भी जानते हो कि किसी भी बीज को दोबारा पनपने के लिए इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट दैट योर रूट्स आर स्ट्रॉन्ग. हियर इन आवर ऑथेंटिक वॉइस, चैनलिंग आवर ऑथेंटिक वॉइस के लिए सबसे पहला रूट है कि आपके अंदर का डायलॉग क्या है. अगर आपके अंदर का जो मोनोलॉग ही चल रहा है, एम आई गुड इनफ, एम आई स्पीकिंग द राइट थिंग, अरे मैं ये बोलूंगी तो कुछ हो जाएगा क्या, अगर मैं ये बोलूंगी तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, तो कितनी सारी बार वी से फेक yeses when in our heart we want to say a no. In our heart we want to say doesn't work for me. Something as basic as that, our food choices, our choices of media, our choices of clothing, our choices of going out and meeting our friends.
the moment we are attached in a family environment, हम हैं nurturers, हम हमारा ये ग्लास है, अगर ये हमको अगर कोई पानी मांगेगा तो पहले हम पिलाएंगे, पहले हम औरों को देंगे, फिर हम we would consume. But in this giving attitude, what we forget is we forget our own authentic voice. और फिर क्या होता है कि जब हम इस जर्नी पे निकलते हैं, चाहे वो, so let's talk about it from a coaching perspective, like आपकी जो कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी से मैं खुद आ रही हूँ, spaces where we've met, we know a lot of women. देखो मेरे लिए क्या एडवांटेज था, मैं शुरू से करियर में थी, मैंने 16 साल एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में बहुत सारे बैटल्स लड़े थे, राइट, लड़े है। लेकिन सबसे बड़ी बैटल आपके अंदर की बैटल है। सबसे बड़ी बैटल ये है कि am I being real? Am I really even speaking my mind? I don't want to go to this party today. I don't want to dress up like this today. आ रहे हैं मेहमान, whatever. Today I'm not in a place where I can host them, right? And वो क्या होता है, हम इतने दिनों तक दबाते रहते कि वो फाइनली वॉल्केनो की तरह फटता है, राइट? चलिए वो तो पर्सनल रिलेशनशिप की बात होगी, बट आज अगर हम कोचेस की बात करें, हम करियर की बात करें, a lot of us are wanting to build our own careers, right? Challenge that we are facing there in wanting to be confident, in wanting to speak our mind, is for so long. It's a muscle. आपने इतने साल तो मसल एक्सरसाइज करी नहीं, अब आप अचानक से चाह रहे हैं कि आप खड़े हो और वो अंदर से ग्लो के जैसे आ जाए, राइट? ये हमें भी, अच्छा छोटी सी बात से रिलेट करते, स्किन केयर ले लेते हैं। एज वुमेन वी आर ऑल वेरी वैनिटी फोकस्ड एंड वी वांट टू लुक अ सर्टेन वे एंड स्टफ लाइक दैट। आप कितना भी मेकअप कर लो, अगर नीचे अंदर एक पिंपल आ रहा है ना, उसको छुपाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो अंदर से आ रहा है। तो आप कितना भी डेकोरेट करके कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करें, लेकिन अगर आपके अंदर की डायलॉग ने आपने अपने आप को छोटा बना रखा है, तो उसको बड़ा बनाना बहुत चैलेंज है। So when I say authentic self-confidence, what I mean is, first you need to be a bigger person inside your heart. You need to first allow yourself to know that it is not a small thing. मैं बहुत बेसिक एग्जांपल देती हूँ आपको। आज हमारा ये जो कॉन्वर्सेशन है, somebody ping me कि क्या हम इस समय बात कर सकते हैं, तो मैंने फटाफट उनको, अच्छा मुझे तो आता है, अब सेल्फ प्रमोशन में मैं अनअपोलोजेटिकली सेल्फ प्रमोशन करती हूँ, तो मैंने उनको ये मैसेज भेजा कि मेरा ऐसे ऐसे ये लाइव है, मैं अभी इस वक्त नहीं हम मिल पाएंगे, आई विल बी एबल टू अटेंड टू दिस आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। So this person turned around like, oh, very fancy, like you've become a celebrity kind of a thing. Okay. So I was like, nahi yaar, when you're doing your own thing, na, it's very important for you to be visible, right? So this person turned around and told me कि गरिमा जो तुम कर रही हो ना, उसको छोटा मत बनाओ. Don't diminish your own self. Don't diminish your own achievements. The fact that somebody is posting you, wanting you to be there, talk to you, celebrate it. The other thing where confidence comes from is hype yourself up. You deserve it. You've done it. The fact that people are tuning into this live is also a big deal. आप घर के सारे काम, ऑफिस के सारे काम, सब कुछ, between all of that, you're managing your own learning. You're wanting to hear from somebody how you can be a better version of yourself. Just pat on your back a little more. Journal a little more. एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझे एक कोच हमारे हैं, उन्होंने समझाई थी। जैसे मान लीजिए बहुत सारी बार हम अपने अंदर की ऑथेंटिक वॉइस को क्यों दबाते हैं, क्योंकि हमको लगता है उसकी जगह नहीं है। चाहे वो हम ऑफिस में बॉस के सामने कर रहे हैं, चाहे हम वो घर में इन लॉज के सामने कर रहे हैं, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप में भाई बहन हस्बैंड के साथ कर रहे हैं, टू दी एक्सटेंट एज अ टीनेज मॉम कभी कभी हम अपने बच्चों के सामने भी चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनसे भी पंगा नहीं लेना है, यार शांति चाहिए, राइट? सो दिस coach of mine, he gave me a very good idea, saying, Garima, at the end of the day, sit with your pen and paper and say, how many yeses did I say when I meant it was a no? मैंने कितनी सारी जगह हाँ बोला जब मेरे दिल में ना था बोलने। मम्मी ये टीवी देख लो इतने बजे, बेटा नहीं नहीं पढ़ाई कर लो, क्या आप तो कभी भी नहीं देखने देते, अरे मैंने कहा अच्छा ठीक है जाओ। I wanted to say a no, right? Since now my husband calls and says कि आज evening में 4 guests आ रहे हैं, and could you host and could you do this, that, blah.
यार मेरी 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 कॉल चल रही है ना, अरे यार क्या है, तू घर की कॉल है ना, तू कल मूव कर लेना, तेरे तो अपना है ना, तू थोड़ा सा देख लेना. You can say no. Yes, correct. एंड देयर इज अ वे ऑफ सेइंग दैट, बट माय पॉइंट इज, ये जो आप ऑथेंटिक कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, वो आता है अपने आप से पहले तो सही. हाँ ना, maybe like whatever, have a solid dialogue with yourself, number one. Number two, celebrate your wins, even if it's something as basic as कि आज 15 मिनट में वॉक कर पाए. Hmm. Even if it's like आज मेरे को 2 लीटर पानी पीना था, मैंने 2 लीटर पानी, like acknowledge yourself for the wins, right? And last but not the least, create boundaries that you respect and people respect. क्योंकि one thing is clear, नेहा, हम अपने environment को सिखाते हैं कि हमें कैसे treat किया जाए. You would know some people, इससे पंगा नहीं लेना यार. Hmm. वो Correct. कहाँ, कुछ लोग हैं, आप दूर मत जाइए, रिश्तेदारी में भी देखिए, आपको पता है कुछ रिलेटिव्स के साथ पंगा नहीं लेना. True. कुछ लोग की Agree. बाउंड्रीज बहुत क्लियर है. एंड देयर आर सम जो ऐसे रेड रोल लेकर, कम वॉक ऑल ओवर मी. बी अ नाइस पर्सन, बी अ गिविंग पर्सन, बी द नर्चरर दैट यू हैव टू बी, बट don't compromise on your own voice, first with yourself and then slowly and steadily with the outer world. And on top of that, then learn how to say it in a way that it works for you. Yes. So it's a combination of both, which I understand, that understanding yourself better, that where you're stopping your voice, and then understand the tactics. You know what is happening nowadays in the world? People are moving behind the tactics and the tools by which they can become a better communicator. So it's like that how should my body language should be, how I will speech. All of that is important though, but the real part of it which you said, that first you own your voice, you understand that are you ready to actually speak up with your authentic self. So that I feel really powerful, and that's why I would say every person need life coach. Before anything you learn in this life, I would say life coaching is must for everyone, which I understood with your perspective. So anybody of you listening us and you feel like that, okay, I went to some meeting but I am not able to speak, understand why this happening. Now Garima has given you so many examples. Yes. So thank you so much for sharing your insights on this. Now we'll move to the next question. So it's like most of the time what happens when we want to say something, we say it with a logical mind. Okay. जैसे जैसे एक नो के ही एग्जांपल ले लें, ठीक है, अगर हमें नो कहना है तो इट्स लाइक वी विल से, जस्ट डायरेक्टली से दैट आई डोंट वांट टू कम देयर, और दिस विल नॉट वर्क फॉर मी. ओके. But when the same person also says that my intention was not to hurt you, my intention was not to say negative in this case, but I wanted to say no. So sometimes we are very logical when we are saying something and somebody's misunderstanding. With me happened a lot earlier, so I am also working on that. But I would say many people say that कि मुझे ऐसा कहना नहीं था, बट मैंने कह दिया, स्लिप ऑफ टंग हो गया मुझसे. ठीक है, मैंने बोल दिया, बट नाउ यू जस्ट, some people do not even ask for forgiveness, they do not say sorry, because by logic they are right, but the way they communicate, they were not able to set the expectations. So how a person can combine both their logic also and their intuition also, so that they can create a magical impact on anybody who's they are connecting. Great. Very relevant question, and very, um, I really love the question because it comes from a very conscious place. Well, it also shows your ability to see, right? So great. नंबर वन है, आपको उतना पता ही है अपने बारे में, यही बहुत इम्पोर्टेंट है पहले तो स्टार्ट करने के लिए. क्योंकि कि लॉट ऑफ अस गेट स्टक इन दैट रट दैट आई एम राइट ऑल द टाइम. मैंने तो कुछ गलत नहीं करा, तुम्हें ही गलत लग गया, पता नहीं क्यों. Just the fact that you're ready to move the lens inwards and see, oh, did I say it in a way that Yes. this could have impacted? So, number one, great. That is the starting point, first of all. Having said that, you're absolutely right. See, इसमें ना दो तीन चार बातें हैं. कैसे कहा जाए, facts versus empathy. Logic is all about facts, but empathy is all about your right brain, your feelings, your emotions. Be it
like you were very in the beginning you were talking about that आप किसी से मिलते हैं उनके शब्द आपको याद रहे ना रहे, how that person made you feel is something that you will always remember, right? and and therefore more than what you said versus how you said it, tonality का बहुत impact आ जाता है. Now to the question के to the point के जब हम लॉजिकल आंसर दे रहे हैं यस या नो, ये कर सकते हैं नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, दैट कैन ऑल्सो बी वेरी ड्राई. वर्सेस क्या हम ये कर सकते हैं, नहीं वो एक्चुअली पता है फिर क्या हुआ ना, ये हो गया तो लंबी कहानी है, उस चाचा की मौसी की बुआ की ताऊ की बहू की बेटी की डडरा 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 का ये हुआ, उसकी वजह से फिर वो हो गया, फिर ये हो गया, फिर प्रलय आ गई, कुछ तो भी हो गया, एंड देयर इज अ 2000 वर्ड लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन. वन इज एब्सोल्युटली ड्राई कि कुछ भी हम नहीं यस या नो देंगे, या हम इतना लोड कर देंगे उसे एक्सप्लेनेशन से. द पॉइंट इज इट्स अ balancing act, right? It's somewhere between do not over explain yourself to a place that you sound defensive versus do not be so curt and rude that you cut off a certain circle. But how do you identify the sweet spot? Like I said, conversation is a two-way street. दो लोग हैं ना इसमें, एक रिश्ता है, from conversation to connections to relationship. Now you have to see that in your radar of relationship, who are you talking to? What is your depth of relationship? What is your depth of understanding? Another thing that you need to be very mindful of is I may be very curt and to the point or I may over explain. This person, इसके साथ मेरे पास redemption का कितना चांस है? अगर तो मैंने बिल्कुल ही कट टू चेज जवाब दे दिया आज, से फॉर एग्जाम्पल मेरे बचपन के कुछ दोस्त हैं, वो ऐसे दोस्त हैं कि नेहा अगर वो 4 बार 5 बार 10 बार भी फोन करेंगे ना, मैं 10 बार नहीं उठा पाऊंगी, तो वो 11वीं बार भी फोन करेंगे और वो पहले पूछेंगे ठीक है, जो मैं बोलूंगी हाँ ठीक है बस बिजी थी, फिर मैं शुरू होंगी वहां से, फायर कहाँ मर गए, क्यों नहीं अवेलेबल, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट? वैसे कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो शायद एक या दूसरी कॉल के बाद तीसरी बार कॉल नहीं करेंगे और अज्यूम कर लेंगे कि ये तो यार ईगो है या एटीट्यूड है या समथिंग लाइक दैट, राइट? नाउ द पॉइंट इज उस इस रिश्ते को मैंने कितना नर्चर किया है, मेक्स अ मैसिव डिफरेंस. किससे मैं कैसी बात कर सकती हूँ, राइट? बहुत छोटी सी एग्जाम्पल है क्योंकि फीमेल कम्युनिटी, तो मदर और मदर इन लॉ का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं. माँ को हम कितनी बार कितनी भी चीजें कैसे भी कह सकते हैं, पर when it's a new relationship, right, with a mother-in-law, and by God's grace, like at least in my world, I've been able to turn it around to a place where today I can maybe share so much more with my mother-in-law क्योंकि वो मेरे डेली के स्ट्रगल्स देखती हैं, वो हर रोज होती हैं. वर्सेस मैं अपनी मम्मी से अगर हफ्ते 10 दिन में एक बार बात कर रही हूँ तो आई रादर भी कि चलो उनकी सुन लेते हैं, राइट? तो ये ना बहुत, like I said, बड़ी early on I was interested in psychology. Conversation, communication, what to say, how to say is all a science of human psychology. It's all a sign of human psychology. There are times when you're like, do not mess with me. आपको एक लाइन वो मतलब there are times that you have to like cut it off there. मान लीजिए आपके वर्क स्पेस में कुछ बहुत क्रेजी चल रहा है, somebody is taking you for granted, you are working extended hours, you are not being rewarded or acknowledged for the effort you are making. ये घर में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है. Someday you have to take a stand. वो स्टैंड बहुत अलग होगा वर्सेस कभी आपको एक्सप्लेन करना है, वो डिस्कशन एक बहुत अलग होगा. तो क्या इसका एक मैं पैकेट में से निकाल के रेडीमेड जवाब दे सकती हूँ? नहीं. वो नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत कस्टमाइज्ड होता है हर सिचुएशन के लिए. पर या आप यू टू रियलाइज कि एक जैसे अगर ये एक पेन है, एक एंड पे है बिल्कुल ड्राई वो एंड रूखा सूखा जवाब, और एक एंड पे है बिल्कुल, तो ना उसको ऐसे जाने दो ना उसको ऐसे जाने दो, जितना आप उसको बैलेंस में रखेंगे वो उतना आपके लिए अच्छा है, right? So that doesn't spill over on this end or that end. Now understand here is this, every person has their way of
conversation with people. Sometimes people is like over explainer, and sometimes people do not explain. So it's like for me, it's many time I over explain everything whenever especially I say no earlier, but now I say just directly no. But now I'm also learning the sandwich method of saying no, so it becomes better for me. So Absolutely. yeah, but I feel for everyone it will be, different. So if you feel like It'll you be are, different. Also, the other thing is नेहा कि when you are over explaining ना, एक चीज जो आप नहीं नोटिस करते हैं अपने बारे में, आपकी बहुत एनर्जी लीक होती है. हाँ, करेक्ट. आपका बहुत टाइम, इतना तो शायद सामने वाले ने सोचा भी नहीं था जितना आपने उसको कहानी सुना दी. बट जो आपने सैंडविच मेथड की बात करी, एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड बहुत सारे लोग जिनके लिए टर्म नहीं है, उनके लिए हम रिकैप कर सकते हैं. पहले कुछ अच्छा बोल दो, फिर बीच में थोड़ा सा करेला डाल दो और उसके ऊपर फिर एक मीठा बन लगा दो. राइट? इट्स अबाउट saying something like, oh, I really love to come, but I'm so sorry, I'm occupied with this thing. But next time I'm going to make up for it for with ABC. So this is a very well known technique. या. बट मैं ये इसमें भी ये बात बोलूंगी, जब तक कि आप इसको तब यूज करें जब आप इसको अपनी रियलिटी बना सकते हैं. डोंट करेक्ट. फेक इट. Because the moment you try and fake it, तभी मैं authenticity की बात करती हूँ. The moment you try and fake that niceness when you want to say a no, non-verbal communication में, body language में, आपकी टोन में, सब तरीके से सामने वाले को कन्वे हो जाता है. जैसे कितना होता है ना, अगर कोई फोटो के लिए स्माइल करने के लिए बोलता है, हम नकली स्माइल करते हैं वर्सेस असली करते हैं. एग्री. यस, ऐसा होता है. तो वो सैंडविच मेथड भी यूज करो, तो जब तक उतना पॉलिश ना हो जाए तब तक ध्यान रखो कि सच, there's no replacement for the truth. Yes, correct. And that's why I said that, most of the time we run behind techniques and all the tools and method, but that actually Hmm. don't work when inside of you something is going on and outside you're trying to become someone else. So I completely Absolutely. resonate with this, and thank you so much for sharing all of that. Now let's move to our next question. Let me see if anybody here messaged anything. Okay, those of you are watching us, Manika, Karnam, thank you so much for joining us. Yes, let me see if they have messaged anything. Right, it's okay. So let's move to the next question, which I feel every woman will resonate here if you're watching us. And what we are going to talk about is something. It's like all those communication blocks which we face Hmm. each and every day. So not as a women entrepreneur also, but as a woman, we want to say something to somebody, and it impacts our relationship. It's like distancing from the family members. It impacts with the people. Most of the time what I see is many women entrepreneurs, they are depending on the DM conversation. It's like they ask people to DM, and once Hmm. somebody's DM, what is going to happen? The conversation is going to start. And many Hmm. times when I did the session with those women entrepreneurs, I saw they didn't know if somebody actually messaged what to do. Okay, so Okay. it's like conversation sequence was difficult for them because they don't know how to convey their message. It is about the Hmm. business, but in life also, which I see about women, that they don't know when they meet other people how to Hmm. actually break the barrier of those communication gaps, and how Hmm. do somebody start the, I would say, communication, connect with somebody. And in relationship also, if you see now, हम कह सकते थे पर हम कहते नहीं है, या फिर हम अच्छे से बता सकते थे, बताते नहीं है. So all those communication gaps which women face, how one can overcome that. Hmm. Very important question. Very important question, and very evidently seen also. See, one thing is very basic. Like I said, let's come from a place of human psychology. From Yes. a human psychology perspective, जब एक बच्चा बहुत छोटा होता है, जब वो डांस कर रहा है, जब वो हंस रहा है, खेल रहा है, आप देखेंगे जब वो कुछ अच्छा करता है और हम ताली बजाते हैं, लाइक यू आर अ मदर, आई एम अ मदर, वी सीन the child loves a lot of attention, a lot of appreciation Hmm. all the time. If the child's done anything, he or she is going to turn back and look at the elders कि अच्छा क्या बिहेवियर को रिवॉर्ड करा जा रहा है और किस बिहेवियर को रेप्रिमांड किया जा रहा है.
तो ह्यूमन बींग्स की बड़ी प्राइमल नीड है, बड़ी बेसिक नीड है टू बी सीन, राइट? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम a lot of shame is attached with a woman on being seen. ऐसे कपड़े मत पहनो, you will attract undue attention. ज्यादा जोर जोर से मत हंसो, you will attract undue attention. ऑफिस में कोई बात हो रही है तो जाने दो, पंगा क्यों लेना है, तुम्हें थोड़ी मशाल लेके निकलना है. So undue attention. So you've been taught, it's a learned behavior to not speak up your mind, right? To be able to articulate well. And because I'm a communications coach, so बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि गरिमा, जब हमारे सामने कोई सिचुएशन आती है, बातें हमें बहुत सारी कहनी होती हैं, पर हमारे शब्द, वो हेड, हार्ट और टंग का वो सीक्वेंस ही नहीं बन पाता. यहाँ कुछ और चल रहा है, यहाँ कुछ और चल रहा है, निकल तो कुछ और ही रहा है या नहीं निकल रहा है, राइट? It's about aligning your entire being to what you are really wanting to say. And नेहा, वो कहाँ से आएगा? वो आपका clarity of thought से आएगा. जितना आप अपने हेड और हार्ट में क्लियर हैं, और जितना आपका बैरियर वर्बल, कि जितना आप बोल सके अपनी सच्चाई ऑनेस्टली, उतना इजी हो जाएगा ना. And I'm not saying that you're being untruthful. I'm saying very early on you try to project a certain demeanor. कि ऐसे दिखते हैं क्योंकि ये एक्सेप्टेबल है. पापा आते हैं तो थोड़ा शांत रह लेते हैं, थोड़ा अगर 4 लोग जुड़े हैं तो लेट मी पुट अप दैट नाइस स्माइल बिकॉज दैट्स एक्सेप्टेबल बिहेवियर, राइट? एंड वो एक्सेप्टेंस और वैलिडेशन के गेम में आपने खुद का रियल सेल्फ का हार्म कर लिया, आपको पता ही नहीं है. And now when a client sits in front of you and you've got to counsel them, a part of you as a coach is knows कि मुझे थोड़ा टफ लव देना पड़ेगा. मुझे पता है कि ये पर्सन को शेक करके अपने कंफर्ट जोन से निकालने के लिए मुझे थोड़ा टफ होना पड़ेगा. बट फॉर एवर माई बीइंग टफ वाज नेवर रिवॉर्डेड. तो अ पार्ट ऑफ मी ऑल्सो वांट्स कि अरे यार, ये पहली बार मेरे से बात करे तो मैं वो बातें बोलूं जो इसको सुनना है, सो दैट एक्सेप्टेंस आए. See, my point is, लेकिन अगर आप उस राह पे चलेंगे, आप वैलिडेशन और एक्सेप्टेंस ढूंढेंगे अपनी सर्विस के लिए, तो आप अपनी सर्विस से ही डिसर्विस कर देंगे, आप उसी के साथ इनजस्टिस कर देंगे. से फॉर एग्जाम्पल, मैं एक क्लासरूम में अगर कम्युनिकेशन पढ़ा रही हूँ, सिखा रही हूँ, तो एक चीज जो मैं पहले दिन जाकर इस्टेब्लिश कर देती हूँ ना, कि एक वो कहानी सुनी होगी आपने, बचपन की कहानी है कि टेस्ट चल रहा था और ये बड़े अच्छा विजुअल भी है, बड़े आराम से मिल जाएगा उसमें. जिराफ भी खड़ा है, बंदर भी खड़ा है, फिश भी साइड पे है, रैबिट भी है, बिल्ली भी है, और वहां पे हेडमास्टर देख रहे हैं कि अच्छा जी, हम सबको एक मापदंड से देखेंगे कि पेड़ सबसे जल्दी कौन चढ़ता है. अब कोई जानवर तो बंदर तो फर्स्ट आ ही जाएगा, इसका मतलब ये थोड़ी कि खरगोश में गुण नहीं है या बिल्ली में गुण नहीं है, या you getting my point? Yes. Same as with human being, we just look similar, but everybody is unique. So the point is that why are you not getting confident about your one-on-one coaching sessions? Why are you not getting confident about your one-on-one services? Why on the nth hour what you want to say is not coming out of your mouth in a proper sequential articulated way? Is because you are completely trying to be somebody else in your head and your heart. You do not have clarity of who you are first. Right? For example, for myself, it was very hard for me to accept that I can get very assertive. I can get very dominating in certain professional conversations. I know for sure that there are times when I just lose it when I see something that's not going as per my desires. तो मुझे अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ा. ठीक है, अब जैसे मैं वीडियोस बनाती हूँ, मैं देखती हूँ एज अ कम्युनिकेशन, मुझे लगता है कभी कभी मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ, राइट? स्पीड वो है. ये कुछ बातें मैंने अपने बारे में एक्सेप्ट कर ली हैं. एज वुमेन वी आर वेरी कॉन्शियस ऑफ हम कैमरे पे दिख कैसे रहे. अरे यार, ये एंगल में ना थोड़ी डबल चिन आ रही है. तो when you are sitting as a coach and you're sitting there to serve somebody, keep yourself aside. Get out of your own way. आप अपने रास्ते से तो प्लीज हटो, फिजिकली भी हटो, इमोशनली भी हटो, मेंटली.
नेहा आपने भी ये काम किया है, मैंने भी ये काम किया है, मुझे एक चीज बहुत अर्ली ऑन समझ आ गई कि इस काम में बहुत थेरेप्यूटिक एंगल है। चाहे आप डिजिटल स्किल्स सिखा रही हैं, चाहे मैं कम्युनिकेशन या प्यूबर्टी के ऊपर बात कर रही हूँ, इट इज अ वेरी वर्टिकल, वेरी डीप वर्क। एंड मुझे शुरू में बहुत डर भी लगता था कि कोई मेरे साथ अपनी बात करेगा तो क्या मेरे अपनी कोई बातें ट्रिगर हो जाएंगी। आपको वो अपने सारे डर, अपनी सारी कॉन्वर्सेशन, अपनी सारी लैक ऑफ क्लैरिटी को साइड पे रखना पड़ता है, एंड दैट्स व्हेन यू कम टू अ प्लेस ऑफ सर्विस। So honestly, there is no easy answer to how to become better. Like I said, some tips and tricks on a daily basis. What are the yeses? What are the nos that you need to turn into yes? Journaling on a daily basis. On a regular basis, take a challenge of shooting yourself from front camera. यार, we were never, हम मिरर्स लेके थोड़ी घूम रहे थे। कोविड के दौरान एक बहुत अच्छी रिसर्च आई थी कि स्क्रीन फटीग की, जितना आज की टेक्नोलॉजी के जमाने में, एंड यूर अ डिजिटल कोच, यू नो इट बेटर देन मी, जितना हम खुद को फिजिकली देख रहे हैं स्क्रीन पे, वीडियोस में, वी वर नेवर सपोज्ड टू एज ह्यूमन बीइंग सी आवरसेल्व्स सो मच, because that critical voice is coming in again and again and again, and it's hampering your inner dialogue. It takes a lot of courage to accept yourself for however you're looking in on that screen. तो ये इसमें बहुत सारी बातें हैं, बट द पॉइंट इज दैट अगर आपने डिसाइड ही किया है कि आपको कोच बनना है, और आपने डिसाइड किया है कि आपको अपने आप को दुनिया की सर्विस में लगाना है, तो ये कुछ छोटे छोटे प्राइसेस हैं जो आपको पे करने होंगे। आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे हिंदी है, या कोई वर्नाकुलर लैंग्वेज है, वो साफ होनी चाहिए। आपको अपनी आर्टिकुलेशन स्किल्स पे काम करना होगा। आपको जर्नलिंग करके अपने अंदर क्या चल रहा है इससे टच में रहना होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चाहे आप विजुअल कंटेंट बना रहे हैं, चाहे आप ऑडियो कंटेंट बना रहे हैं, डेली बेसिस पे 2 से 4 मिनट की वीडियो, 2 से 4 मिनट का ऑडियो मैसेज बना दीजिए और छोड़ दीजिए। 3-4 दिन बाद जाकर फिर देखो, फिर 3-4 दिन बाद जाकर देखो। 30 डेज में अगर आप खुद इंप्रूव नहीं हुए, विदाउट एनी टेक्निक, विदाउट एनीथिंग एल्स, इट टेक्स वर्क, इट Correct. टेक्स वर्क। Yes. And I feel like the way you said, na, I feel like it's a journey, everybody. I don't feel like there is a start date or end date, or it's like a 6 month of some kind of work you will do and you will transform into somebody else. So I can totally resonate with whatever you said. And I feel like there are a lot of work which we need to do. And it actually going to cover all the areas of the life. When we speak better, we understand ourselves better, we understand our goals better, because then Mm. we are speaking from inside and we know that this is something we really want. So I believe that whatever Garima shared, it actually resonate with everybody's life, that where are you right now and where you want to go, you will understand when you start speaking, right? So Mm. thank you so much for sharing all of that. And the way you shared about communication, we get so much of an insight. And I just want to, it's like we have so many people already watching us, and what advice you want to give people to start working on their own communication? You said about joining and Mm. all of that, but most of them is like, if you can just give a 3-step process to them, so Mm. that they can Mm. stick on the wall. Okay, I need to do this, and they can start their conversation, right? So Mm. what would be the best advice from yourself, from your side? Great, Neha. Thank you so much. Thank you so much. That's first of all, thank you for this opportunity, because we're almost coming to the close of this. Yeah. So I want to again reiterate that it's very important for us to start these conversations. And like you rightly said, कि कुछ practical tips की बात करते हैं। बड़ी छोटी सी बात है। सबसे पहले तो अगर आपके कंटेनर में जो होगा वो रिप्रोड्यूस होकर बाहर जाएगा। कम्युनिकेशन कॉन्वर्सेशन से बनती है। कॉन्वर्सेशन आप क्या दिमाग में सोचते हैं, क्या दिल में फील करते हैं, उससे स्टार्ट होता है, राइट? फ्रॉम अ प्रैक्टिकल टिप्स पर्सपेक्टिव, दिल में क्या चल रहा है आप खुद में टटोलिए। whatever form of reflection works for you. Daily reflection is very important, right? Daily dialogue is very important. What is in your head is also very important. So what communication are you consuming?
What communication are you consuming? क्या आप पॉडकास्ट सुनते हैं, क्या आप कहानियां पढ़ते हैं, क्या आपका what are you consuming in the like we do it in the human body to keep ourselves alive in our mind, right? So number one, be very mindful of कि दिल में क्या चल रहा है, उसके लिए रिफ्लेक्शंस करना बहुत जरूरी है. आपके हेड में क्या चल रहा है, उसके लिए रिफ्लेक्शंस करना बहुत जरूरी है. But the third most important thing is it is a kinesthetic skill. विजुअली दिखता है, ऑडिटरीली फील, बस ये काइनेस्थेटिक स्किल है कम्युनिकेशन. आपको कॉन्वर्सेशन से पहले नर्वस यहाँ नहीं फील होता, बॉडी पे रोंगटे खड़े होते हैं, पेट में हॉल होती है या नर्वसनेस फील होती है, राइट? इट्स अ फिजिकल बॉडी दैट नीड्स टू गेट मोर कॉन्फिडेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. वो कैसे होगा? एम्बॉडी ही करने से होगा. जैसे मैं आपको स्विमिंग या साइकिलिंग इंस्ट्रक्शन देकर नहीं सिखा सकती, कम्युनिकेशन प्रैक्टिकल नॉलेज से ही बनती है. When you come in my community, when you work with me, I do a lot of practical work, a lot of physical work, क्योंकि वो फिजिकलिटी को नर्वसनेस रिलीज करनी है. बट अगर मैं एक छोटी सी टिप दूं ऑन अ रेगुलर बेसिस, जब भी आपका कोई पब्लिक स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी है, तो बॉडी को नहीं पता यार, वो जैसे अगर गरम प्रेस है, प्रेस करते हुए हाथ तो एकदम से वो करेगा, ऐसे ही बॉडी के लिए कुछ भी नया होगा तो वो नर्वस फील करेगी. 5 जंपिंग जैक्स कर लो, कमरे में आने से पहले 5 जंपिंग जैक्स कर लो, बैठ के 3 डीप ब्रेथ ले लो. ये आपको पैरासिम्पथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं. लॉन्ग टर्म पे जाना है तो हम रिफ्लेक्शन करेंगे, हम अच्छा कंटेंट सुनेंगे, हम भाषा में इंटरेस्ट लेंगे, हिंदी भाषा चाहे इंग्लिश लैंग्वेज, उन लोगों को सुनेंगे जो अच्छा आर्टिकुलेशन करते हैं, उन्हें एम्बॉडी करने की कोशिश करेंगे. और उसको मेरी फिजिकलिटी में कैसे लाएंगे? खुद की प्रैक्टिस से. जितनी स्टेज पे बात करने का मौका मिले, ग्रैब इट. जितने पॉडकास्ट पे जाने का मौका मिले, ग्रैब इट. जितने क्लासरूम में खड़े होकर टीचिंग करने का मौका मिले, ग्रैब इट. जहां जहां आपको 1 to many का मौका मिल रहा है, वहां वहां जाइए, करिए. इट्स अ काइनेस्थेटिक स्किल. Yes. बात करने से बात बनेगी और फिजिकली आपको लेकर निकलना पड़ेगा इस गाड़ी को. True. Thank you so much for all these practical tips. And I would say I'm gonna note all of that. If you are not noting down, then you must do. And with that, we have come to the end. I would say the conversation, like the way we are doing, it's like it should never end. So it's like I I am learning so many things from you, Garima, I would say. And thank you so much for being on our show. But I just want to add here that how many of you understood that one simple thing? The moment I said there is a sandwich method, you think about, okay, there is some method, there is something which we can learn. I just want to say that many times we try to do so many things by ourselves कि हम खुद कर लेंगे but वो कहीं ना कहीं हो नहीं पाता है. So I have experienced that a lot before coming to coaching industry, and now I can say this with guarantee with anybody, without any coach नहीं होगा. You need a person to push you each and every day that you start doing this. Even a simple activity like physical work, she said she do in her community, everything we need to do on everyday basis, and something which is everyday basis is not a comfortable thing. So I want to ask you, Garima, if anybody would like to be part of your one-on-one or your community, how they can connect with you. देखिए, थैंक यू सो मच नेहा, दैट्स सच अ वंडरफुल क्वेश्चन, बिकॉज बहुत जरूरी है वो रास्ता खोलना सबके लिए, उन्हें दिखाना, राइट? मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है ऑथेंटिसिटी के नाम से, और गरिमा SN, गरिमा शर्मा निझावन, और लिंक्डइन पे भी. तो किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू वो मुझे DM कर सकते हैं, और वहीं से आपको लिंक मिल जाएगा मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर जुड़ने का, जहाँ पे ऑन अ रेगुलर बेसिस हम बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड इवेंट्स अनाउंस करते हैं. एंड nas.io पे भी मेरी कम्युनिटी अवेलेबल है. तो ये सारे लिंक्स मैं आपको दे दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन पे डाल दीजिएगा. एंड मोर देन हैप्पी, वेरी हैप्पी टू कनेक्ट एंड डू दिस वर्क, क्योंकि ना आप कितने बढ़िया इंसान है, कितना भी बढ़िया काम करें, अगर आप उसको आउटवर्डली प्रोजेक्ट नहीं कर पाते हैं तो फिर वो सारा मजा वहां पे किरकिरा हो जाता है. तो लेट्स ग्रो टुगेदर, let's do this for our powerful puff ladies and for your gang and for my tribe, and happy to do it together.
Yeah, thank you so much. And I hope those of you who understand the power of communication are going to take action. I'll be sharing all the links in the description of this live session so you can just go through them and do not miss the chance before everything becomes paid for all the people around, right? So, with that note, we are going to add today's Coaches Talk Show. Thank you so much, Garima, for accepting our invitation and coming to this show. We are really, really grateful for your time you spent with us, and surely in future also we'll invite you for some other topics, some other platforms for sure. And anything would you like to just give a message to the audience who are still with us? I'm honored and delighted, Neha. I think you're doing a fantastic job. For the last year and a half, at least, I've been seeing your journey. I've seen you transform. I've seen myself transform, honestly. I've been in all those rooms. We've done this work together. And I am so happy that this is becoming easy and accessible. एक time था all of this knowledge was reserved, especially communication, personality development, body language, tips and tips of psychology. This was reserved for the privileged people. Like बहुत senior leadership, Google, McKinsey, उनके पास होता था ये knowledge, या royalty के पास होता था, या politicians के पास होता था, या film stars के पास होता था. This wisdom is trickling down, and people like you and me, we are becoming the mediums to bringing it down to every individual, because this is the knowledge age. This is the age when you need to take action, and we are just mediums to make it happen. उससे ज्यादा कुछ भी नहीं. If I can do it, you can do it, and I would just want more and more of us to jump on this bandwagon and grow together. Thank you so much, and I really loved your message. I hope all of you are going to take action. I'm going to see each one of you listening to us going to take action for sure, and let's together become a better communicator, right? So, with that note, I'm gonna, yep, initiation, no, okay. So, with that note, I'm gonna end today's Coaches Talk Show, and I'm really happy for each one of you stayed with us till the end. Make sure you share your takeaway in the comments, and if you have any question, you know how to connect Garima, right? So I'll see you in the next episode of Coaches Talk Show with another inspiring speaker with us. Till the time, keep growing, keep taking action, and have a nice day. Bye bye, everybody. Take care and see you next time.